Hi guys, what's up? I hope everyone is doing absolutely fine. Okay, so can you hear me? Can you see me? Is like all right, perfect. So चालू करते हैं आज का discussion. So we were discussing environment and ecology. It's a very important topic. So इस पे अच्छे से focus करना and try to understand everything under the sun related to that. So I'll wait for like 1 minute before everyone can join. On Sundays, we'll have classes from 8 to 9 p.m. So this is also moving forward, except like these days, there is a lot of work. So yeah, sometimes I'll not be able to take the classes, but rest assured, those classes will be scheduled on some other day. Okay. So so we had covered various concepts like concept of sustainable development. We had we covered concept of sustainable development or had we not? So, and have we covered like the natural vegetation of India? Have we covered that topic? So, did we cover natural vegetation of India? Okay, we've covered that also. And have we covered concept of sustainable development along with agriculture? So, I don't think we have covered that portion, right? Agriculture wala nahi kiya na? All right. A very important concept because still like half of the population is dependent on that for livelihood, and 100% population is dependent on it's how can we do sustainable agriculture. So that is what we are going to discuss. Okay. So I hope everyone is ready. So without further ado, let us get started with our discussion on agriculture and sustainable development. Okay. You can continue right now, Shreya, if you have just joined my classes. But it will be great if you can watch some prior class also. All right. So that is also absolutely fine. All right. तो चालू करें फिर आज का डिस्कशन अच्छे से. लेट अस गेट स्टार्टेड. So agriculture and sustainable development, it's a very important topic. So please remember this. All right. So agriculture and sustainable development, very important indeed. A lot of questions are asked from this directly or indirectly. So it will help you in writing a great answer. So if you can focus on it like nothing like it. Okay, sir. So we discuss the concept of sustainable agriculture, methods of sustainable agriculture, inputs for sustainable agriculture, organic farming, integrated pest management, contribution of biotech, national mission for sustainable agriculture. All these are like various important points. The sustainable agriculture, method of sustainable agriculture, inputs for sustainable agriculture, organic farming, integrated pest management, contribution of biotech, national mission for sustainable agriculture, etc. तो एक एक करके सारे पढ़ते हैं हम. So it's one of the world's largest industry, employs more than 1 billion people, right? Generates over $1.3 trillion worth of food. And basically 50% of Earth's habitable land is just occupied by pasture and croplands. Can you believe it? 50% of Earth's habitable land is just covered by either crops or they are covered by pastures. So this is a huge number, right? So, and obviously urbanization is increasing, people are migrating to cities. So expansion of cities always takes what obviously agricultural land, soil fertility, forest, wetlands, wildlife habitats. So ये सब कुछ तो इसकी बैंड बजेगी. But on the other hand, at the same time, you also need what is called as um, you need more and more food also, right? Because population is burgeoning, and because population is burgeoning, so you need more and more food also at the same time. So it is like a catch 22 situation, isn't it? काफी weird सी situation है ये कि you need more food also, and at the same time the land gets deteriorated because population will take of the agriculture. So what are the ways to improve it? So we have to increase the yield, isn't it? So let us say if you are a working professional but you get only 5 hours a day, so you have to increase your focus, isn't it?
तो आपको इतना फोकस करना पड़ेगा कि जो आम एस्पिरेंट 8 घंटे में पढ़ता है वो आप 5 घंटे में पढ़ लो। दैट इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू आर लाइक रियली सबमर्ज्ड। सबके साथ एक बार तो होता ही है लाइफ में, इजंट इट? एक बार तो ऐसा पढ़ाई का दौर आता है वो 2-3 घंटे का, कि वेयर यू रिमेंबर एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन रीडिंग, राइट? होता होगा एक बार, कभी सबके साथ होता होगा। You remember every line, you remember every concept, and you are just, oh my god, I am in a aha zone, in the zone so called. So especially like 1 or 2 days before the exam, काफी होता है ना, एक साथ आप पूरा रिवाइज कर लेते हो, जो आपको 3 महीने लगे थे वो 3 घंटे में हो जाता है। तो फिर आपको लगता है वो 3 महीने क्या किया था फिर, राइट? कई बार होता है जो 2-3 महीने से पढ़ रहे थे वो एक दिन में रिवाइज हो गया पूरा। तो यार उस 2 महीने में क्या कर रहे थे जब आप एक दिन में रिवाइज कर लिया था? जब डंडा पड़ता है पीछे से तो काफी फर्क पड़ता है, मतलब सर पे, समझ रहे हो? So please remember this, like instead of UPSC ka danda, have a like a self punishment for yourself if you're not able to do it. Okay. So pollution is a huge issue. Agriculture is a leading source of pollution. Many of you don't know it, but जो यूट्रॉफिकेशन होता है ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रीज को ब्लेम कर देते हैं बहुत आराम से, बट लाइक गंगा एक्सेट्रा, दीज रिवर्स आर पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। आई होप यू नो दैट। सो एग्रीकल्चर इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। भर भर के उसमें से DDT और NPK और पता नहीं क्या क्या छिड़कते रहते हैं फार्मर्स, एंड ऑब्वियसली इट विल गो इवेंचुअली either in your food which you will have to eat, or it will go basically in your river through the rain and drainage. So, you know, it is not a joke when I say all this, it's a very bad thing. They also remain in the environment for generations. Many pesticides are suspected of disrupting the hormonal system of people, hormonal system of wildlife, and fertilizer runoff impacts waterways, coral reefs, etc. Then let's talk about poverty. So subsidies provided by US, European governments to their agriculturalists, they encourage overproduction. आप समझ रहे हो? So होता क्या है कि ओवर प्रोडक्शन होता है तो मान लो कि अब प्याज और आलू ऐसे ही बढ़ रहे हैं, सो फार्मर्स विल ऑलवेज रिमेन पुअर, डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इनका प्राइसेस इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज सब्सिडीज एंड एक्सेट्रा इज गिवन। obviously you need food prices to be down, otherwise people will not be able to afford it, but extremely poor people are like quite commonly employed in agricultural sector. I hope you know that. So the lower income bracket is employed in the agricultural sector by and large. Okay. So now again this is a huge issue that poverty keeps on increasing, biodiversity loss keeps on happening, unless and otherwise someone will arrest this. वाटर कंजम्पशन, 2/3 ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर कंजम्पशन गोज इन एग्रीकल्चर। तो आपको लगता है कि आप पानी पीते हो, या पानी एक्चुअली बचाना है तो आपको राइस उगाना बंद करना पड़ेगा पंजाब में, आप समझ रहे हो? आप एक गिलास पानी कम पी लोगे या एक दिन नहीं नहाओगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 70% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज गोइंग इन एग्रीकल्चर। आप समझ पा रहे हो क्या? ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें कि मतलब पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवन करोगे तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो शायद 5% ही रीजन है, बल्कि इंडस्ट्रीज हो सकता है 35% रीजन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो प्रॉपर, जैसे आप बोलो यूपीएससी इसलिए क्रैक नहीं हो रहा मेरा कि मैं 1 घंटा ज्यादा पढ़ता हूँ तो क्रैक हो जाएगा, तो मैं नींद में से उड़ा देता हूँ 1 घंटा। तो इट्स अ वेरी बैड कोरिलेशन। अरे 1 घंटा ज्यादा आप 14 घंटे से 15 घंटे करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट 14 घंटे से शायद 10 घंटे करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दोगे तो शायद यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, राइट? तो इट्स लाइक कि आपको है ट्यूबरकुलोसिस और आपको दवाई बुखार की चल रही है, पैरासीटामोल दी जा रही है, तो कुछ होगा नहीं उससे। इफ यू हैव ट्यूबरकुलोसिस यू विल नीड टू टेक ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन टू ट्रीट इट। Similarly, water is getting consumed. 70% of it is going in agricultural sector. So I would rather have those crops like millets, etc., which don't take that much water, right? वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में ग्रो ही नहीं करूंगा। और दूसरा, जो इरिगेशन के मेथड है वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो मेथड होता है कि भाई बिल्कुल एट द रूट हो, ड्रिप इरिगेशन हो, न्यू सिस्टम्स हो। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डन। बट लोग क्या करते हैं, लोग टारगेट करते हैं एक दिन नहीं नहाएंगे, केप टाउन में बहुत कॉमनली होता है। तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट दैट इज अ यूजलेस थिंग टू डू व्हेन योर एग्रीकल्चर इज टेकिंग 70% ऑफ द वाटर। इट्स लाइक अगेन इट्स मोर सिंबॉलिक बिकॉज वो इजी टारगेट होता है, राइट? कि आपको दिख रहा है भाई कि 10 लीटर पानी उस दिन बच गया, तो दैट इज द इजियर टारगेट। सिमिलरली यूपीएससी में भी ऑल्सो एस्पिरेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस इजियर थिंग्स कि घर वालों को दिखाने के लिए 7 घंटे सो रहा हूँ मम्मी, मैं तो रोज रात को 11 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो दैट इज नॉट द वे टू क्रैक यूपीएससी। ओके, ज्यादातर लोग क्या करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए
कि पापा आपने बोला था 7 घंटे सो तो मैं सो गया, आपने बोला था फलाना क्लासेस ज्वाइन कर लो मैंने कर ली, आपने बोला था ये बुक्स ले आओ मैंने ले आओ, आपने बोला था रोज 10 घंटे पढ़ लो मैंने पढ़ लिया, आपने बोला था 20 मॉक टेस्ट दे तो मैंने दे दिए. सो मोस्ट ऑफ योर लाइफ विल जस्ट गो इनटू दिस कि चलो अगर फेल होंगे तो वी कैन ब्लेम इट ऑन समवन एल्स, बिकॉज हम तो वही फॉलो कर रहे हैं जो उसने बोला था. आप समझ रहे हो? So that is a very wrong way to live life, because then you are just preparing yourself for failure. You are not taking any responsibility. 100% guarantee you will fail in that regards unless and until you say कि नहीं भाई मैं तो 8 घंटे सोता हूँ और मैं 8 घंटे ही पढ़ता हूँ और मैं 8 घंटे चिल भी करता हूँ रोज, मैं PS4 खेलूंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, जो मेरी मर्जी होगी करूंगा, बट उन 8 घंटे में जो मेरी एफिशिएंसी होगी दैट विल बी मोर देन डबल देन नॉर्मल एस्पिरेंट. आप समझ रहे हो? सो दैट इज माई लाइफ, दैट इज रोमन सैनीज लाइफ, दैट्स हाउ आई वाज. मैं आई डोंट लाइक लिसन टू अदर्स एडवाइस. तो जो मेरे को लगता है सही चल रहा है मेरे ऊपर आई डू दैट. सो ओके. तो जब मैंने IAS छोड़ा था तो यू हैव नो आइडिया, सो मेनी ऑफ माई लाइक सीनियर एंड बैच मेरा परेशान कर दिया था लवासना में इधर उधर. बट लाइक मोस्ट पीपल हु हैव दैट थॉट दे विल जस्ट लाइक टेक इट बैक. आप समझ रहे हो? क्योंकि आप एक बार दे भी देते हो रेजिग्नेशन, सो यू हैव अ विंडो वेयर यू कैन विड्रॉ इट. तो इतना इमेंस प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि जो आम आदमी होते हैं, मियर मॉर्टल्स होते हैं, तो दे जैसे कि चलो ठीक है हो गया गलती हो गई वापस ले लेते हैं. एंड देन दे आर अगेन स्टक फॉर 10 years 20 years. ओके. So the point is that you have to sometimes take decision and थोड़ा डाइग्रेस हो गए, बट दिस इज द सेम प्रॉब्लम विद एनवायरनमेंट ऑल्सो. टफ डिसीजंस नहीं लेती सरकारें. जैसे इफ यू हियर ग्रेटा थर्नबर्ग, सो इफ यू हियर हर तो मतलब शी इज ऑल्सो मॉकिंग एवरीवन के क्या टाइम पास करते रहते हो तुम, मतलब 99% प्रॉब्लम उससे हो रही है, तुम 1% को टैकल कर रहे हो, तो वो भी ऐसे ही मजे लेती है उनके. So similarly, like if you want to tackle pollution of Delhi, or if you want to, so you have to strike at root cause. अगर गंगा गंदी हो गई और उसको साफ कर दिया तो फिर गंदी हो जाएगी, राइट? अगर यमुना में टॉक्सिक है और उसको क्लीन कर दिया तो फिर गंदी हो जाएगी. So you have to strike at the root cause. I hope you understand that. Okay. सो अगर आपका यूपीएससी प्रिपरेशन में सिलेक्शन 90% तो इसलिए नहीं होगा बिकॉज यू जस्ट हियर अदर्स, यू रियली डोंट वांट टू क्रैक इट, यू आर डूइंग इट ताकि आप अपने मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ को बोल सको कि हमने तो वो कर लिया जो तुमने बोला था, नहीं लिखा था तो किस्मत में क्या होगा, राइट? भाई किस्मत तो बनानी पड़ेगी ना मतलब ऐसे थोड़ी कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए थोड़े से डिफिकल्ट कॉल्स लेने पड़ते हैं लाइफ में, लड़ाई करनी पड़ती है घर वालों से कि नहीं मैं तो 8 घंटे ही सोऊंगा, आपको नहीं पता है, आप चुप रहिए, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई नो दिस इज माई लाइफ, आई टेक डिसीजंस. बट ज्यादातर लोग बोल नहीं सकते कि बुरा लग जाएगा किसी को, माय गॉड उनको बुरा लग गया तो मैं क्या करूंगा. सो ज्यादातर लोग फिर चलो कोई बात नहीं मिडिल ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है. दैट इज नॉट हाउ यू विल अचीव ग्रेटनेस इन लाइफ, यू विल हैव टू फाइट. ओके, यू विल हैव टू लाइक रियली रियली फाइट फॉर एवरीथिंग. Okay, so water consumption is a huge issue. So this adversely impacts freshwater system throughout the world. So that is also a huge issue. Now climate change, many farming practices like burning fields, using gasoline powered machinery, they also leads to huge greenhouse gases. Now, do you know that livestock sector is responsible for almost 20% of all greenhouse gas production? So camels, etc. Lot of these issues are there. So कई countries तो अपने कैमल्स वगैरह को मार देती हैं, जो कैटल वगैरह होते हैं उनको मार देती है लाइफ स्टॉक्स, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल्ड रहे. ऐसी भी हरकतें होती हैं. सो दे रिलीज लॉट ऑफ मीथेन. ओके, सो इन प्रोडक्शन, so methane, carbon dioxide, that is a huge issue. They are ruminants, right? So rumination is a process. So anyway, पढ़ लेना biologically. But so clearing land for agricultural production is a major contributor to climate change. Okay, so please remember this. Now, sustainable agriculture is that method of agriculture which intends to meet the demand of food of the existing generation without impacting the environment. Okay, the method of agriculture which intends to meet the demand of the food of the existing generations without impacting the environment, so the demand of the food of the future generation are not compromised. Okay, so please remember this. All right. And the sustainable agricultural practices will protect the environment. हम already discuss कर चुके हैं सब कुछ. So just read this once. एक बार इसको पढ़ो, काफी अच्छा पैराग्राफ है. So read this once. Okay. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या करेगा? ये अच्छा फॉडर मटेरियल है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड सिक्योरिटी, जो लास्ट पॉइंट लिखा है नीचे नीचे. सो इट हैज टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है. ओके,
सो सबसे जो, अगर मैं एक चीज की बात करूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू फ्यूचर जनरेशन. ओके. Increase production for human food and fibers, provide human with qualitative and less toxic products at low cost. You have to protect environment, obviously goes without saying, environment protection has to be there. You have to utilize natural resources efficiently, increase profitable farm income, enhance quality of life of farmers and communities, and decrease dependency on non-renewable resources. All right. So increase production for human food and fiber needs, provide humans with qualitative and less toxic products, protect environment, utilize natural resources efficiently, increase profitable farm income, enhance quality of life of farmers and communities, decrease dependency on non-renewable resources, and provide food security to future generations. So these are like really, really important points. If you can remember, like nothing like it. Okay. So I hope you'll remember these points and facts. It will help you write an absolutely great answer, immaculate answer in the exam hall. ठीक है सर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. So methods of sustainable agriculture. So like nature of the soil, geography of the region, climate, local material, pests, agriculture suitable to the farmer. So all these things are there which have to be done. So based on this factor, appropriate methods of agriculture should be selected by the farmers. So there are several methods adopted in agriculture, like cultivation methods, selection of improved variety of seeds, proper method of tillage, and mixed cropping, crop rotation. Do you understand what is mixed cropping? What is mixed cropping? Can anyone tell me? So एक तो होता है कि क्रॉप रोटेशन होता है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है. ओके. सो और एक मिक्स्ड एग्रीकल्चर भी एक कुछ कई लोग टर्म बोल देते हैं या मिक्स्ड फार्मिंग बोल देते हैं. तो इनमें डिफरेंस होता है. देखो सबसे पहले तो आपको मिक्स्ड फार्मिंग बता देता हूँ या मिक्स्ड एग्रीकल्चर. इसमें तो आपका लाइव स्टॉक प्लस क्रॉप साथ में होती हैं. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड एग्रीकल्चर जो होता है उसमें तो लाइव स्टॉक प्लस क्रॉप्स एग्रीकल्चर साथ में होता है. ठीक है, उसको तो भूल जाते हैं. फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही फील्ड में दो या उससे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं. आप समझ रहे हो? एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे दो या उससे ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं. एक क्रॉप रोटेशन होता है कि हर दूसरे तीसरे साल में क्रॉप चेंज कर देते हैं, पल्सेस वगैरह को उगा देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड एग्रीकल्चर. उसमें क्या होता है, लाइव स्टॉक यानी कि शीप, गाय, भैंस, बकरी, इनके साथ आप एग्रीकल्चर कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग स्लैश मिक्स्ड एग्रीकल्चर. एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक ही टाइम पे एक ही फील्ड में दो या उससे ज्यादा क्रॉप्स उगाई जा रही हैं. और एक होता है क्रॉप रोटेशन कि एवरी सेकंड थर्ड ईयर यू चेंज द क्रॉप so that the fertility of the soil is maintained. Usually it is replaced by leguminous plants slash pulses which provides nitrogen to the soil. Is it absolutely clear? कोई डाउट किसी कॉन्सेप्ट में? So I hope you will remember these three concepts. It's absolutely clear? Okay. Now what is this mixed cropping? Two or more crops grown on the same field at the same time is called as mixed cropping. Can you just remember this? Two or more crops grown at the same time in the same field is called as mixed cropping. So short duration crop is grown with long duration crop. Like mixing leguminous crops with other crops increase soil fertility because leguminous is responsible for fixing nitrogen. So that is very important. It helps in reducing the use of chemical fertilizers as well at the same time. Chemical fertilizers कम होते हैं और काफ़ी कुछ इससे benefit होता है. So indeed it's very very important for us. Okay. So attention must be paid to some point in selection of crops, like both the crops should not be of the same species. Soil level of usage of nutritive elements should be different. Shade of one crop should not fall on the other crop. Okay. So both of the crops should not be of the same species. ये सबसे important होता है. Okay. वरना दिक्कत हो जाती है. And nutrition, they should not be after the same nutrition, right? वरना तो useless हो जाएगा, वो खाली कर देंगे soil को. And shade of one crop should not fall on the shade of other crops. So these are the things which you take into mind when mixed cropping. Advantages, obviously total production बढ़ जाता है. Let's say अगर कोई pest attack होता है तो वो एक ही crop को खाएगा, isn't it? So usually pests are specific to crops, तो आपका आधा बच जाएगा. अरे wheat की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, आप समझ रहे हो? इतनी वैरायटी होती है wheat की, मैं क्या बताऊँ आपको. अगर कोई बॉटनी का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा. तो ऐसा नहीं कि एक वैरायटी ऑफ wheat के बाजू में दूसरा वैरायटी ऑफ wheat लगा दिया. दैट इज नॉट लाइक, it can be done but it should not be done. So it reduces possibility of losses in adverse condition, isn't it? Let's say बारिश नहीं हुई
तो आपकी जो पल्सेस हैं उनको उतना पानी नहीं चाहिए होता, राइट, बट राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सो एडवर्स कंडीशन जैसे बारिश नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी ना लॉस की। बट अगर आपने सिर्फ राइस लगा रखा है और पानी नहीं मिला आपको फॉर एक्स वाई जेड रीजन, then the crop can get damaged to a large extent. I hope it is understood. It definitely reduces the cost of different farm and inputs. Elements available in soil, solar energy is utilized effectively. And also, farming में क्या होता है इंडिया में, farmers don't work for 4 5 months because there is no work, right? So it increases the number of working days for the farmers. So this is also a huge point. Now you can do like polyvarietal cultivation. Intercropping is also there. Polyculture is also there. So they are like sub variants. So you can read about it. So these are some of the examples. Can you read it? So if they ask you, this is very common. Wheat and mustard is very common in my in village area also in Rajasthan. You'll find this. So they grow wheat and mustard so commonly. Like जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो they are standing side by side at the same point of time. ठीक है? So wheat and mustard is very common. Potato and wheat is very common. Potato rye, sugarcane wheat is also I've seen in my villages. So these are the common things which I have personally observed. But anyway, what is this crop rotation? So per season you change it. All right. So this is called as method of growing different crops in sequence. Is it absolutely clear? एक के बाद एक के बाद एक. So, because if you grow one particular crop continuously, it is not sustainable because it will suck the soil of a nutrients, isn't it? The soil होगी वो deplete हो जाएगी completely. Okay. So nutrient imbalance can cause lot of pest diseases, trigger certain diseases. All these are possibilities. So growing multiple crops in succession on the same land within a year, it is called as multiple cropping. Is it absolutely clear? So this is called as multiple cropping. Please remember this very important point which I am telling you right now. Okay, so this is called as multiple cropping. All right. And following factors should be taken into account for crop rotation. So leguminous and non-leguminous crops should be sown alternatively. All right. So leguminous and non-leguminous crops should be sown alternatively. Crops which require less manure, those that require more manure should be sown alternatively. Is it absolutely clear? So crops which require less water should be grown with more water. Crops should be sequenced by selecting pest-host relation also. All these are very important. Now, what are the advantages? It reduces the fertilizer needs because legumes replace nitrogen removed by wheat. Is it absolutely clear? Legumes will replace nitrogen which is taken by wheat. So you don't need to spread nitrogen fertilizers. It will reduce pesticide cost, field operations because अगर आप wheat ही wheat लगाते रहोगे साल बाय साल तो जो पेस्ट होंगे वो तो बढ़िया मजा आ जाएगा ना उनको, तो उनके बेबीज होंगे, फिर उनके बेबीज होंगे, लाइन लगा देंगे वहां पे. So pests, insects, disease will spread like anything, isn't it? If you grow wheat after wheat after wheat after wheat, or rice after rice after rice. But if you break it, then their cycle also breaks. They will die, all of them, isn't it? Because their host is gone, so they will not be able to survive. Then it will protect the water quality and it will reduce soil erosion. So please remember this very important crop rotation concept. It will increase the organic matter in the soil. It will add diversity. It will provide food and cover for wildlife. All these are like minor things. So can you see this rice, wheat, pulses? This is a very typical example of crop rotation. Most common example of crop rotation is rice followed by wheat followed by pulses, or it can be like rice followed by pulses followed by corn. Okay, so you will always see one cereal plus one pulse. So can you see this is a pulse, this is a pulse, this is a cereal, this is again like cereal, pulse, pulse, cereal, again like the same thing. Okay. Now, what are the inputs for sustainable agriculture? See, sustainable has to be renewable, right? आज है कल नहीं है तो वो sustainable तो नहीं होगा. So sustainable basically means it has to be renewable first of all. Okay. So ये तो हम establish कर चुके हैं. So sustainable agriculture requires the use of inputs which are renewable, cause minimal damage to the environment. Okay. So it is renewable plus cause minimal damage to the environment. All right. So this becomes possible with the reduction of chemical fertilizers and pesticides. And it helps in maintaining the health of the soil, which leads to production of crops which are less toxic. Okay. So please remember this, very important. So healthy crops require healthy soil along with adequate water, nutrients. It reduces the growth of pests, diseases. So what do you do? Composting सुना है किसी ने? Composting is very important. You can use mulches to conserve soil moisture.
जो आपका पेड़ है उसको जलाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो that is also very very important. Okay, so anyway, so this can be done by composting, reducing tillage, using mulches to conserve soil moisture. It increases water retention capacity of the soil, using cover crops, etc. Okay, so biofertilizer. Yeah, sorry for that. So biofertilizers. So these are basically chemical fertilizers which damage the nutrition balance of the soil. Okay. So please remember this. So these are the chemical fertilizer which damage the nutrition balance of the soil because they are not used according to the necessity or requirement of the soil. Okay. So sustainability of agriculture requires minimal or no use of chemical fertilizers. Is it absolutely clear? So these are obviously chemical. The chemical fertilizer will harm it, and they are made in industries. So you basically revert to biofertilizers. Now many people think that biofertilizers are not chemical in nature. Okay, so let me tell you and bust all myths. Everything is chemical. Okay, तो कई लोग बोलते हैं कि मैं बायो शैम्पू यूज करता हूँ, मैं नेचुरल शैम्पू यूज करता हूँ, मैं केमिकल वाला नहीं यूज करता. राइट, ये सुना होगा ना, आजकल ये काफी ट्रेंड चल रहा है कि हम केमिकल यूज नहीं करते, हम नेचुरल यूज करते हैं. भाई सब कुछ केमिकल होता है, बाय द वे. ओके, एवरीथिंग इज केमिकल. योर ब्लड इज ऑल्सो अ केमिकल. The everything is chemical. Your saliva is a chemical. Your eyes has a fluid which is a chemical. Everything is chemical. I hope you understand that. So a lot of people make you a fool कि भाई ये chemical वाला है, ये chemical नहीं है. Everything is a chemical at the end of the day. Okay, everything is based out of chemistry. Water is also a chemical at the end of the day, strictest sense में. What they are trying to say, they are synthetic products which otherwise don't exist in nature. That is the point which they are trying to make. Okay, so please understand that. I hope it is clear. तो ऑर्गेनिक के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा इतना फ़ायदा होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो एनीवे, सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स मिनिमल और नो यूज. ये हमेशा वेव आती है ह्यूमैनिटी में. आपको पता है 1920 में लोग मॉर्फिन बेचते थे खांसी को हटाने के लिए, और 19 वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू के बीच में सिगरेट्स फॉर प्रमोटेड लाइक एनीथिंग. क्योंकि आपको पता है ना, सिगरेट पहले होती ही नहीं थी. लेट 19 सेंचुरी में डिस्कवरी हुई थी मास प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट की. एक बंदे ने मशीन बनाई थी. उसके चक्कर में वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में सिगरेट्स बहुत बुरी तरह प्रमोट करी गई थी. दैट इज वाई टिल टुडे पीपल स्मोक सिगरेट्स. 200 साल पहले सिगरेट नहीं होती थी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ऑब्वियसली यू कैन स्मोक टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, बट एवरीथिंग फॉलोज इंडस्ट्रीज. So please remember this. It's just a recent phenomena, 120 years ago, but वो लोगों को इतना addict. Same with sugar also. Before industrial revolution, there was no concept of sugar. After industrial revolution, sugar came into being. Okay, मतलब पहले minor scale पे होती थी, किसी ने थोड़ा गन्ना खा लिया, गुड़ बना दिया, वो अलग बात है. I'm talking about sugar. So all these like vegetable oil, sugar, all these are products of industrial revolution. Before industrial revolution, none of this fast food, junk food, anything did not exist 200 years ago. Okay, so please remember that. So biofertilizer ही होते थे पहले, chemical fertilizer का तो कोई concept था ही नहीं. So everything is post industrial revolution. Okay, so basically what you use is you use bacteria, algae, fungus, etc. to enhance nutritional profile of the soil. So that is very very important. So in nature there are a number of useful soil microorganisms which can help the plants to absorb nutrients. And the cultured microbes packed in some carrier material, they are called as biofertilizers. So these are living microbes of bacterial, fungal and algal origin, and their mode of action differs. Is it absolutely clear? पहले अपने आप उग जाते थे. पहले उतनी एग्रीकल्चर मैसिव स्केल पे थोड़ी होता था बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि कोई लोग ही नहीं थे तो खिलाना किसको है. मैं वो आप समझ नहीं पा रहे. बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड पॉपुलेशन वो 700 मिलियन 800 मिलियन. आप पॉइंट समझ रहे हो? इंडिया की आधी पॉपुलेशन होती थी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन. इंडिया की हाफ, मतलब यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, 4-5 स्टेट पकड़ लो इंडिया के, उतनी पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की. सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट मैसिव स्केल. ओके, just take 6 states of India, they will be equivalent to the entire world population 250 years ago. That's it. I'm not even kidding.
So it was called as subsistence agriculture. They were doing it for their own sake, plus some barter economy here and there in the village. All right. So I hope you understand that. Now, biofertilizer will fix the atmospheric nitrogen in the soil. This is very, very important. So, fix the atmospheric nitrogen. See, India's GDP was very high at that time because all the other countries were very bad. Okay. We were not great, but relatively we were great. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. आपकी क्लास में सारे ही गधे भरे होंगे यूनिवर्सिटी में, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लोगे तो काम चल जाएगा. बट द मोमेंट वर्ल्ड किक्ड इन अनदर गियर इन मैनचेस्टर, यूके, जर्मनी, फ्रांस, तो फिर हमारी बैंड बज गई. ओके, बिल्कुल पीछे छूट गए हम, बहुत पीछे छूट गए. सो टिल टुडे वी आर जस्ट प्लेइंग कैच अप गेम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एनीवे, so biofertilizer will fix atmospheric nitrogen in the soil, root nodules of legume crops, and will make it available to the plant. What is the major reason of population explosion, sir? The only major reason is medical advancement. There is no other reason whatsoever. So this is a huge reason for your growth, because I have vaccines are free, basic drugs are free, paracetamol is free, everything is free, right? Basic. So this is a huge reason. Medical and advancement, modern medicine, that is major reason for even poorest of the poor will not die. ORS पी लोगे, डायरिया होगा तो, बुखार होगा तो पैरासीटामोल खा लोगे, right? All these drugs are freely available in any government hospitals, even in the remotest corner of India. So जो पहले आपके आज से 100 साल पहले अगर किसी को डायरिया होता तो मर जाते थे लोग, लाइन से मर जाते थे, राइट? अभी कितनी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया की? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया? मैं आपको बताया था ना कि जैसे 28 वॉज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, बताया था ना ये सब तो मैंने आपको, कि अगर शुरू के 28 दिन में मर जाते हैं तो 28 होता है, फिर उसमें 5 जोड़ देना, फिर 5 जोड़ देना. एनीवे, so it is just 3%, so that is the answer which I was looking for. So 3% of the babies will die before 1 year. Okay, you can take 33 whatever, 33 by 1000, उसको एक ही बात है. ठीक है, is it absolutely clear? I am pretty sure उस टाइम पे इंडेक्स नहीं होते थे, बट अर्लियर इट यूज टू बी लाइक 200 300 आउट ऑफ 1000 एटलीस्ट. बता रहा हूँ तो मैं आपको कि अगर किसी भी कपल के 10 बच्चे होते थे, 9 बच्चे होते थे, 2-3 की डेथ तो सर्टेन थी. मैं आज से 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ. सो why did that change? Because of medical advancement, because people can afford drugs, etc. Okay, I hope you know that 300 children used to die out of every 1000. It was very common, it was fairly common, not just in India, across the most developed country of the world today. Sweden, Norway, इनकी बात कर रहा हूँ मैं. आज से 150 साल पहले सब बर्बाद कंट्रीज थी ये सारी की सारी. So हाँ, so benefits of biofertilizer are they solubilize the insoluble forms of phosphates, they scavenge phosphate from soil layers, they produce hormones, antimetabolites, and they decompose organic matter, they help in mineralization in soil. Okay, और क्यों बढ़ेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मेडिकल एडवांसमेंट नहीं हो? मैं एक दिन के लिए सारी ड्रग्स बंद कर देता हूँ पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ एक दिन के लिए. आपको पता चलेगा मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड. एक महीने के लिए बंद कर दो तो आपको पता चलेगा पॉपुलेशन हाफ हो गई पूरे वर्ल्ड की. आई एम नॉट इवन जोकिंग. आप सारे हॉस्पिटल, सारी ड्रग्स हटा दो, हाफ हो जाएगी पॉपुलेशन, थैनोस बन जाओगे आप. सो इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट. ओके, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, कॉलेरा, इट विल वाइप आउट पॉपुलेशंस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. आपको कुछ पता भी है? मतलब ये सब कंट्रोल्ड है बिकॉज मॉडर्न सैनिटेशन एंड मॉडर्न मेडिसिन. So biofertilizer will increase the availability of nutrients and improve the yield by 10 to 25%. Is it clear? So it will increase the availability of nutrients, and it will also improve the yield also. So जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग है, राइजोबियम डाल दिया, अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब. अजोला को आपको पता है ना, अजोला एक फर्न होती है, इसको राइस के साथ उगाते हैं तो राइस की प्रोडक्टिविटी 30-40% बढ़ जाती है. ओके, पता है आपको ये बात? अजोला एक फर्न होती है, अजोला. So you grow it along with the rice, so it increases the productivity of rice. Okay, so azola is very commonly used in agriculture. Okay, so please remember this. It is used along with rice.
a lot. Okay, so please remember that. Anyway, so it increases the yield of rice by 30-40%. Can you remember this? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से पूछ लेंगे azotobacter, rhizobium, azoospermum, azolla. Which of the following is grown with rice to increase the yield by 30-40%? So answer is azolla. It's a fern. It's grown with rice. Very common practice, azolla. Now, types and features of biofertilizers. So, bacterial biofertilizers are there like rhizobium. It is a symbiotic, so it will associate with plant roots. Is it absolutely clear? So, it will associate with plant roots of legumes and then it will fix the nitrogen. These are free living, so they will do it on their own. They don't need to associate with plant roots. Then, fungal biofertilizers like mycorrhiza. Myco का मतलब होता है fungus. All right. Is it absolutely clear? So when fungus gets associated with roots of higher plants and it helps in the absorption of the nutrients to the higher plant, in turn the plant provides food to the fungus, must also protect plants from external invasion by pests. That is called as the mycorrhiza, right? It's a symbiotic relationship. लाइकन का नाम सुना था आपने? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं इसको. So लाइकन, माइकोराइजा, अगर आपसे कोई पूछे, so both these are example of mutualism. म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट करना. ओके, so mycorrhiza, fungus plus root of higher plants. Lichen is no one is harmed is a very bad statement. देखो आप गलत चीजें मत पढ़ के जाना मेरे से. No one is harmed is also done in amensalism, commensalism. This is not mutualism. Is it absolutely clear? तो ये थोड़ा याद रखना. माइकोबैक्टीरिया तो अलग ही चीज है सर, उसका फंगस से कोई लेना देना नहीं है. माइकोबैक्टीरिया अलग है, वो तो बैक्टीरिया है, उसका फंगस से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम माइको है, बस दैट्स ऑल. तो बायो में मत फंस जाना वरना परेशान हो जाओगे ऐसी चीजों में. लाइकन का मतलब होता है फंगस प्लस एल्गी. माइकोराइजा का मतलब होता है फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ओके, तो फंगस काफी सारी रिलेशनशिप्स बनाता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में. Then algal biofertilizer, okay, blue green algae, etc. Azolla is a fund. It's technically not here. And actinomycetes like Frankia, etc. So all these are the various example. All right. So let's discuss this rhizobium. So it is found in the roots of higher plants, as I told you earlier. So roots of the higher plants में काफी commonly मिलता है. So it fixes atmospheric nitrogen in association with legumes. All right. So please remember this. Azoospermum, it is an associative symbiosis with higher plant system. So please remember this. Azotobacter is important. It fixes nitrogen on its own. All right. So you can remember this. Blue-green algae is not an algae. It is a bacteria. Can you remember this? So these are bacteria. It is not at all an algae. Azolla is a fern. Is it absolutely clear? Fern का मतलब होता है pteridophyte. All right. Do you remember bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, algae? So azolla is a fern. It's a middle plant. So the fern appears as a green mat over water. It is very important for paddy cultivation. It improves the production a lot. Okay. So blue-green algae sometimes is grown with this fern. It fixes the atmospheric nitrogen and it has 2 to 3% nitrogen in wet condition. So it provides lot of nitrogen to the rice and it grows very good. So azolla उगाओ, बढ़िया मस्त राइस होगा आपका, ठीक है, along with the azolla. Now phosphorus solubilizing biofertilizer. So phosphorus is an important element. It is required for plant growth. It is also required by rhizobium for nodulation. Okay. So some microorganisms can solubilize phosphorus. It can be absorbed by plants. And mycorrhizal fungus is a microorganism. It has the ability to dissolve phosphorus to make it available for absorption. Okay. So mycorrhizal fungus, it is a microorganism. Is it absolutely clear? So these fungus, what they will do is it will provide nutrients to the plants. Okay, ये nutrients provide करेंगे और plant in turn इनको खाना देगा. Fungus is not capable of making its own food, so it needs partner for food. Okay. Organic farming is basically, by and large, it excludes the use of chemical fertilizer, pesticides, growth regulators. Okay, it is not 100% exclusion. So I hope you will remember this. This is symbiotic is a different word. आप लोग गलत terms use कर रहे हो. Symbiotic का मतलब होता है पास में चिपक के रहना. आप समझ रहे हो? Sim का मतलब होता है साथ, bios का मतलब होता है living. It is not necessarily mutualism. I hope you will remember this. ये थोड़े गलत concept हैं, आप लोगों के गलत फंडे हैं. Mutualism is different concept. Symbiosis is a different concept. Symbiosis में तो आपके काफी सारे concept आ जाते हैं. आप समझ रहे हो क्या? मैं आप पढ़ाऊंगा आपको बाद में, तो आपको बताऊंगा
कि म्यूचुअलिज्म इज जस्ट वन टाइप ऑफ सिम्बायोसिस. ओके, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन. म्यूचुअलिज्म में बेनिफिट होता है. एंड जैसे मान लो आपका पैरासाइट हो गया, तो आपके ऊपर मान लो आपके अंदर एस्केरिस वर्म रहता है, तो इज इट लिविंग विद यू? जब आपके पेट में एस्केरिस वर्म रहता है तो आपके साथ ही तो रह रहा है, वो आपके अंदर ही तो रह रहा है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सिम का मतलब होता है साथ, बायोस का मतलब होता है लिविंग. म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें. सो पैरासिटिज्म हो गया या आपका म्यूचुअलिज्म हो गया, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस. कई बार कमेंसलिज्म भी हो जाता है कि वो बाजू में उसके जैसे एपीफाइट्स हैं, सो एपीफाइट्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ अदर प्लांट्स, राइट? दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस. ओके, बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर. समझ पा रहे हो क्या? सो सिम्बायोसिस का मतलब होता है बस साथ में रहना, दैट्स ऑल. म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है प्लस प्लस. कमेंसलिज्म का मतलब होता है प्लस जीरो. एमेंसलिज्म का मतलब होता है माइनस जीरो. प्रेडेशन का मतलब होता है प्लस माइनस. पैरासिटिज्म का मतलब होता है प्लस माइनस. इज इट क्लियर? विल ड्रॉ दैट टेबल अगेन, डोंट वरी. So organic farming or organic agriculture is to ensure sustained productivity, environmental protection, making food available, food products raised without chemicals of any kind. So all these points are covered here. So agriculture is primarily applied biology. It is most likely to be successful when it accepts, follows principles like on-farm waste recycling, non-chemical weed management, biological pest control, integrated nutrient management. All these are like really, really important things. Okay. So integrated nutrient management for sustaining soil fertility, crop productivity, etc. So all these are like extremely important points when it comes to agriculture. So organic farming is a holistic production management system. It promotes and enhances agroecosystems like biodiversity, biological cycles, all biological activities. All these are very important points. Now, what are the components of organic farming? Can you see this? इसको रट लेना. एक तो क्रॉप रोटेशन करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं. क्रॉप रेजिड्यू को बर्न नहीं करते हैं, क्रॉप रेजिड्यू को यूज करते हैं. ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होती है, वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं. बायो पेस्टिसाइड्स. देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होती है, ZBNF, 2-3 लोग पूछ रहे हैं मेरे से. सो टेक्निकली इट इज नॉट जीरो बजट एज सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो कवर करेंगे अपन एक बार हो जाए सब कुछ तो. And vermicompost. So vermicompost is like when you have earthworms and other organisms create this vermicompost. Okay. अरे अभी तो पता है water is also a chemical. Okay. So please remember that. Okay. So in India there is a great potential for utilization of crop residues. Is it absolutely clear? So like 50% can be utilized as animal feed, जानवरों को खिला दो. Rest can be used for nutrients. And but rather than burning, you can make compost out of it, isn't it? Compost बना सकते हो उसका आप, क्योंकि it's an organic matter and that can be used as a manure, etc. So wheat and rice straw, if you inoculate with fungal species, it has a very good effect on crop yields and very important in restoring the nutrition of the soil. But उसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा, right? You need to develop industries regarding that, right? So what is organic manure? It is derived from biological sources like plant, animal, human residues. So organic manure act in many ways in augmenting crop growth, soil productivity, and direct effect of organic manure is uptake of humic substance. Okay, so all this is very important. So इसमें क्या होता है? Humus होती है, समझ रहे हो? Humus समझते हो? So these are like organic components which are very important for soil's health. They help in growth of the plant like anything, and it also allows microorganisms to परमिएट द सॉइल. जब माइक्रोब्स और ह्यूमस होता है तो हेल्दी माइक्रोब्स आर देयर, सो पेस्ट वगैरह उतने सर्वाइव नहीं कर पाते. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? एंड बिकॉज माइक्रोब्स आर देयर, सो इट विल फर्दर जनरेट मोर एंड मोर वर्मी कंपोस्ट. दे विल जनरेट मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स, एक्सेट्रा. एंड देयर इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर. बल्की में क्या आता है? सो फार्मार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, एक्सेट्रा. सो इसको बारे में पढ़ लेना. इसमें क्या होता है? डंग, यूरिन, फार्म लिटर, लेफ्ट ओवर सब इकट्ठा कर लिया एक जगह और उसमें डाल दिया, और उसको थोड़े टाइम के बाद आपने निकाला. इफ यू लीव इट फॉर 3 to 4 months इट विल हैव ऑल दिस. समझ गए? तो गांव में होता है एक शेड ली, उसके अंदर सारा कचरा डाल दिया आपने, सब कुछ भर दिया उसके अंदर, 3-4 महीने के बाद निकाला तो बढ़िया उसमें मैन्योर क्रिएट हो गई. ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड.
So it will have nitrogen, phosphorus and potassium. Then कंपोस्ट क्या होता है? वेस्ट मटेरियल्स एक्सेट्रा इसमें सब डाल देते हैं, सीवरेज स्लज, एनिमल वेस्ट, वीड, स्टबल, भूसा, ट्रैश, ह्यूमन रिफ्यूज, इंडस्ट्रियल रिफ्यूज सब डाल दिया, एक्सक्रीटा सब कुछ भर दिया इसमें, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो समवॉट लाइक सेम. Green manure is a different thing. Okay, so here what you take is just take the green plant tissues. Is it absolutely clear? So it's a practice of turning into the soil under compost green plant tissue. Okay, so improve physical structure, etc. That is called as green manuring. So that is slightly different. So especially let's say if the crop is leguminous crop, it will add a lot of nitrogen, isn't it? Legume crops are very well known for nitrogen. Now, what is concentrated organic manure? So what you do is this manure is very much concentrated. It has very high concentration of nitrogen, phosphorus, potash as compared to bulky organic manure. Okay. So anyway, now industrial waste is there. It is released from industry. It basically, some of them, if properly processed, can be helped. एक कॉयर वेस्ट होता है, जैसे आपने सुना है कॉयर इंडस्ट्री, पता है आपको? पता ही होगी. So coir is again like a plant-based product. So technically it is an industrial waste, but if you compose it properly after proper decomposition, it will be there. Then municipal and sewage waste. So separation of the toxic waste at the source will minimize the concentration of such elements in the sludge. Okay. So please remember this. Then biopesticides are natural plant products which belong to the secondary metabolites, include thousands of alkaloids, terpenoids, etc. Okay, so these are biopesticides. So they are part of the secondary metabolites. So you can remember this. Okay. So it includes thousands of alkaloids, etc. बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें. Obviously because they are okay. Bioinsecticides are ecologically and environmentally safer, and generally it affects the behavior, physiology of insects rather than just merely killing them. So that is a very, very important concept. Okay. मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, मेटाबॉलिक, जैसे कैफीन ले लो, कैफीन इज अ मेटाबोलाइट, राइट? जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, या आपके जो भी एंड एट द एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना प्लांट के, दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स. So among the biopesticides, all parts of the neem tree have insecticide property. आपने देखा होगा ना, नीम की गोलियां वगैरह डाल देते हैं वीट के अंदर, तो it has like insecticide properties. So what happens is that insects are not able to proliferate in such an environment. Especially the neem seed is very active in this. Okay. So like some of the commonly used are nicotine, जैसे मैंने आपको बताया. So all these are like metabolites. Okay, and they need to be promoted more under integrated pest management programs. What is vermicompost? Vermicompost, worm का मतलब होता है earthworm. Okay, so it is not an insect. For many people think earthworm is an insect. It is absolutely wrong. It is an annelid. Okay, so biologically it is not an insect. आपको जो बोलते हो कीड़ा है, कीड़ा नहीं है, वो insect नहीं है. Right? So it's not an insect. It's a worm for sure, but it is classified under a different classification altogether. So vermicompost is organic manure produced by the activity of earthworms. Okay, and it is a method of making compost with the use of earthworms, which generally live in soil, eat biomass, excrete it in digested form. Okay, so that is called as earthworm. Annelid बताया था ना, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, okay, hemichordata, chordata, pisces, amphibian, reptile, aves and mammals. We have discussed this, right? So उसमें जो 7वें नंबर पे आता है वो annelida होता है. So these are rich in micronutrients, vitamins, growth hormones, immobilized microflora. So these are very, very important. Okay, so they have lot of nitrogen, phosphorus, potassium. तो अर्थवर्म पता है ना क्या कर रहा है? अर्थवर्म खा रहा है और अपने पेट से उसको डाइजेस्ट करके निकाल रहा है. उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. ऐसे दाने दाने से देखें कभी सॉइल के ऊपर, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, कभी आपने देखा हो मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे दाने, वो होता है वर्मी कंपोस्ट. तो उसके पेट में से जाके जो उसका एक्सक्रीटा होता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. तो वो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको खा के उसे गोले गोले बना देता है दाने दाने से. दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट. So it is an organic manure produced by earthworm. They live in soil, eat biomass, excrete in digested form, very much rich in
micronutrients, vitamins, growth hormone, lot of nitrogen, phosphorus, potassium, etc. They are very easily applied to plants, and it helps in the growth of the plants. Now, what is pest? So, pest is basically uh, any organic matter which is detrimental to crop production. It can cause damage to the extent of 30 to 90%. It includes insect, disease, weeds, and non-insect pest includes nematodes, snails, rodents, etc. So all these are like extremely important points which you can remember. Okay, so they can help you, and it's quite easy to remember it. Okay, तो बस इसको आप अच्छे से याद कर लेना. एंड सो दे हेल्प इन रोडेंट्स, मतलब चूहे वूहे हो गए छोटे मोटे, उनको रोडेंट्स बोल देते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द रोडेंट्स. एनी नाउ इंसेक्ट तो आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास होती है. सो there are a lot of beneficial insects also. If you remember, we had discussed this earlier. So there are a lot of beneficial insects. So we had a discussion on this, if you remember it. Okay, so that is definitely there. And so predators feed on other insects, hence control the pests. Some insects are beneficial as they help in pollination of plants. There are commercially beneficial insects also like silkworms which produce silk. So all these are various examples of this. And neutral insects जो होते हैं, ना फायदा करते हैं ना नुकसान करते हैं. So integrated pest management is a sustainable approach. It is very important for sustainable development. Okay. So कहाँ हूँ आजकल, यही हूँ. There's some work, so that's why I was not able to do it. I marked option 2 today. Today's mock test. ठीक है यार, करेंगे अभी, रुक जाओ और थोड़ा. सर वन सी डाउट सर, राइस फील्ड वाटर चाहे कितना भी भर लो वो वापस तो ग्राउंड में ही चला जाएगा ना. नहीं नहीं, पेड़ में जाएगा ना वो. राइस कैसे ग्रो करेंगे? प्लीज़ एक्सप्लेन टिलेज. ओके, मॉक टेस्ट की पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं? ठीक है. हाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फार्मर? बिकॉज it is sustainable, right? It can happen 20 years, 50 years, 100 years from now. Zero budget natural farming says that whatever inputs are there, it is used, and you don't need to put anything external, which is a myth. We will discuss this, why it is a myth. Sir, what is smart agriculture? Is it subset of sustainable agriculture? जब भी ये वर्ड आ जाए ना आपको लाइफ में, जिंदगी में कभी स्मार्ट वर्ड आ जाए, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट मशीन, स्मार्ट रोप, स्मार्ट टूथब्रश, ठीक है, स्मार्ट ये स्मार्ट वो, इसका सिर्फ दो मतलब होता है. इट कैन कलेक्ट डेटा एंड रीड इट. ओके, एंड इट कैन इंटरेक्ट विद यू. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? Usually they are connected with internet, etc. It can collect data and read it, and it can interact with you. Is it absolutely clear? That is the meaning of smart. There is no other meaning of smart. Okay, so whenever you talk about it, तो स्मार्ट का मतलब होता है बहुत सारी चीज होती है. स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट क्लॉक, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट दिस, स्मार्ट दैट, स्मार्टफोन. ओके, स्मार्ट रोप भी आती है आजकल, तो रस्सी कूदोगे तो स्मार्ट रोप भी आ जाती हैं. ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ स्मार्ट थिंग्स. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस quite easily. You can remember. Then methods of pest control. Natural control includes mechanical control, agronomic methods, biological control, physical control, traps, chemical control. All these are very important points. So mechanical control is removal of affected parts, collection, destruction of insects, drying of seeds, tar coating of trees, provision of barriers to prevent entry of pests like greenhouse, etc., clipping off the withered shoots. All this is very important. Okay. So see, this is not like environment and ecology. I am teaching you. This is proper geography. I hope you understand that. That's why I go very fast. I teach sometimes science also. This is hardcore geography. भाई तो proper geography पढ़ रहे हैं अपन, agriculture और ये सब तो. ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे, 6 to 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी सब कवर कर रखा है. ओके, so there are a lot of agronomic methods which we have discussed already. Crop rotation, biological control methods are also there. So insect which kill another insect, उसको employ कर लो, predators, etc. And physical control, and light trap, pheromone trap, बहुत कुछ किया जा सकता है. And chemical control like manual pesticide spraying. All these are important points. Then botanicals, etc. Now contribution of biotech. There is a huge contribution of biotech. So food production increases, right? Agrochemical based agriculture, organic agriculture, genetically engineered crop based agriculture, etc. Then plant, bacteria, fungus, animals whose genes have been altered, they are called as genetically modified organism. So that is also there, commonly seen. And genetic engineering of food is carried out for a lot of purposes to make them resistant to insects, viruses, etc. Now, why this food? For nutritional enhancement. So it can be used to increase the amount of essential nutrients, improve the yield,
genetic engineering can be used to introduce 1 or 2 genes in a highly developed crop variety. So that is why you use this GM food. So it really helps you, right? कई बार कोई भी न्यूट्रिशन डाल देते हैं, जैसे आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, विटामिन ठोक के डाल रखा है उसके अंदर, आजकल काफी कॉमनली किया जाता है. देन सेकेंड इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस से काफ़ी कम हो जाता है. तो जैसे DBF2 होता है, थेल क्रैश से जो निकाला है, तो उससे क्या होता है, अगर टोमेटो और टोबैको में डाल दो तो दे कैन, एनवायरमेंट में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं ना, सॉल्ट सैलिनिटी बढ़ जाती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, राइट. सो अगर आपने 80 DBF2 डाल दिया, एक प्लांट जीन जो थेल क्रैश से निकालते हैं, और उसको टोमेटो और टोबैको में डाल दिया, तो ठंडी गर्मी, सॉल्ट, ड्रॉट, इन सबसे प्रिवेंट हो जाता है. समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, एक छोटे से जीन ने क्या कर दिया. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. जैसे बीटी कॉटन होता है, बीटी ब्रिंजल होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्राई A1AC जीन डाल देते हैं, ठीक है. सो ये डाल देते हैं तो उससे वो एक बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जब बोलवर्म आके उसको खाने की कोशिश करता है, तो बोलवर्म कॉटन तो खाता ही है बट बीटी टॉक्सिन भी खा जाता है, और जैसे ही वो ये टॉक्सिन खाता है उसकी डेथ हो जाती है. समझ गए? सो दैट इज हाउ दे वर्क. गोल्डन राइस जैसे बताया, इसमें भर भर के विटामिन A का प्रीकर्सर डाला जाता है ठोक के. गोल्डन राइस 2 में 23 टाइम्स मोर है इसका. टेस्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस बढ़ जाता है, रिड्यूस द प्रोसेस, स्पॉइलेज बढ़ जाता है, काफी कुछ होता है. बीटी का मैंने एग्जांपल दे ही दिया आपको. सो इसका जो कॉर्न बोरर होता है वो नहीं खा पाता, मर जाता है वो तुरंत. हम क्यों नहीं मरते? हम क्यों नहीं मरते? बिकॉज हमारे अंदर वो टॉक्सिन एक्टिवेट नहीं होता, हमारा स्टोमक एसिडिक है, और जो ये बोलवाम है ये अल्कलाइन है, इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए, वरना हमारी भी बैंड बच जाएगी, हम भी मर जाएंगे, राइट. सो a lot of novel substances can be produced. So BT crops are there, then pest resistance plant, RNA interference technology. So all these are various examples. So इसको एक बार पढ़ लेना. Sir, any mnemonic to remember species? बना लो अपने end पे. I don't think I can help you in that. Is sir, in environment most of the question related species of specific category, are there any mnemonics? तो पूछते हैं कि कौन सी है कौन सी नहीं है, उस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस आते हैं. But that's about it. And plant tissue culture is the development of a new seedling from either as a single plant cell or a plant tissue or part of the plant. Like cells, tissues, part of the plant organs, they used to grow a plant are called as explant. So culture medium may be liquid, solid, semi-solid, etc. Then application of plant tissue culture is micropropagation. Okay. Then anther culture, secondary metabolites from plants. All these are various examples. Then protoplast culture. ओके, प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, ये सब पढ़ेंगे. हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, आजकल एरोपोनिक्स भी आ गया, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है. प्लांट कैन बी ग्रोन एनीवेयर, जस्ट 5% ऑफ द वाटर इज नीडेड, स्टेराइल एनवायरनमेंट, डज नॉट रिक्वायर पेस्टिसाइड्स, क्रॉप्स ग्रो 2 टाइम फास्टर. अब देखो तुरंत जैसे पढ़ लिया, हाइड्रोपोनिक में कुछ नहीं है, पानी में उगाते हैं, सॉइल गैप करते हैं. कैन बी ग्रोन एनीवेयर, ऑब्वियसली पानी कम लगेगा, स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है. कॉमर्शियल प्लांट्स क्योंकि फास्टर ग्रो होते हैं, तो कॉमर्शियल प्लांट्स भर भर के ग्रो होते हैं. कितना सिंपल है, राइट. थोड़ा ऑब्वियसली महंगा होगा, कॉस्टली होगा, फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, ये सब उसके कॉन्स हो जाएंगे, राइट. कितनी देर लगी? में 15 सेकंड लगी हाइड्रोपोनिक्स पढ़ने में, 15 सेकंड में रिवाइज हो गया, अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा होगा तो, राइट. सो आई एम टेलिंग यू थिंग्स कैन बी डन वेरी फास्ट. और ये हाइड्रोपोनिक्स लोग 6-6 घंटे पढ़ते रहते हैं, कुछ होता नहीं उनसे. डिसएडवांटेज क्या होगा? इनिशियल सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा, कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए होगा, पावर आउटेज होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वाटर बेस्ड माइक्रोब्स इजीली आ जाएंगे, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, प्रोडक्शन लिमिटेड होगा, राइट. कुछ प्लांट्स को स्पेस ज्यादा चाहिए तो दे कैन नॉट थ्राइव विदाउट सॉइल. So we'll discuss this. So ये पढ़ लेना. So thank you guys and have an awesome day and take care and I'll see you tomorrow.